Hi guys, welcome back to my channel. This is Shriya Bhattad and if आपने like share subscribe नहीं किया है तो do it now. And yeah, as I promised you कि हमेशा कुछ नया, we'll grow together in this. And yeah, so last time मैंने आपके साथ डिस्कस किया था about a book day in चाणक्य in daily life, right? तो उसमें what we did was मेडिटेशन का हाँ मैंने अभी पढ़ा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू मेडिटेट. इस इनफैक्ट भगवद गीता में भी ये मैंशनड है कि मेडिटेशन एंड योगा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप यू सेन एंड दैट इज़ समथिंग आई हैव टू स्टार्ट येट. वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है मेरा, बट दैट इज़ व्हाट आई हैव रेड. एंड या मेडिटेशन का तो इम्पोर्टेंस हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी मैंशनड है. तो या वन थिंग आई वांट टू स्टार्ट इज़ दैट. बाकी आई टेल यू वन थिंग. तो ना मैं कहीं जा रही थी, आई थिंक आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई वॉज रीडिंग दिस बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश डैश डैश, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होंगे. तो या दिस बुक मतलब देयर आर टू बुक्स विच आई कनेक्ट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल. आई डोंट नो व्हाई. बाकी बुक्स का जो राइटिंग स्टाइल होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट दैन द टू बुक्स आई एम गोइंग टू नेम नाउ. So the one is The Subtle Art of Not Giving a Damn dash 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 dash, and the second book was Do Epic Shit by Ankur Warikoo. I love his writing. I mean how good he writes. Like उसने मतलब crazy, it connects to you. You can like after so many failures that guy made it up and it is crazy, like you connect it. And I just love that book like anything. Whenever I feel demotivated or something, तो दैट इज़ माई गो टू बुक. तो आई लव इट. एकदम ऐसे जेंजी वाली बुक है. आई लव 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 इट. बट द सेकेंड बुक, तो आई वॉज ट्रैवलिंग एंड समथिंग एंड देन फिर ना आई रेड दिस. ठीक है. तो व्हाट हैपेंड वाज देयर वर टू फ्रेंड्स, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स. दे वर ऑन अ ट्रिप. वो लोग ट्रिप पे जाते हैं एंड वहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ देम ही वॉज हाईली ड्रंक and because of that he got into an accident and he died. Okay, and the other one got to know, and then he was feeling very depressed and guilty because he couldn't save his best friend, right? So he was feeling all those emotions and he was very overwhelmed and in depression for quite a few months. And then one fine day what happens was he gets a dream, and उस ड्रीम में ना उसका जो फ्रेंड था वो आया था. एंड देन उसने उसको बोला कि आई एम तो नॉट अलाइव but are you? So oh my god, when I read those I was shivering, legit shivering. I mean crazy. I was asking myself, are we really living? That's a question we all should ask ourselves, because you know it is very important that we, you know, that we have no regrets in life. And giving it a deeper thought, you know, from that day onwards, even I started to do things for a purpose. Like do everything which serves your purpose, what you want to achieve, what your goals are, what your ambitions are in life. So everything you do should somewhere connect to your ambitions, your goals and everything. So that was the craziest part of the whole book. I loved the book. The book is very nice, very upfront, very straightforward, and in a very different way of writing the writer has written. Like, you know, we Gen Zs could connect. Like I was personally struggling through, you know, a lot of things at that time. Also about me, a little about me is I like to read books and review them, and I like to, you know, post some lifestyle videos, मतलब ऐसे ही random, which if in the future I look back at, I would feel really nice to look back at. So if you want to get in this journey with me, do like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye.